This is an ABP Life podcast. बात जब खुद के ख्याल रखने की आती है ना, तो हम महिलाएं इसमें सबसे पीछे हैं। ऐसा मैं नहीं, रिसर्चर्स कहती हैं। डियर वुमेन, योर अटेंशन प्लीज, क्योंकि आज FYI में सिर्फ आप ही की बात होगी। नहीं, आज कोई वुमेन्स डे नहीं है, लेकिन इस बात को करने के लिए किसी खास ओकेजन का भी तो वेट नहीं कर सकते। इंडिया में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस पाए गए हैं। क्यों, कैसे और क्या है ये, बचें कैसे और वो क्या गलतियां हैं जो आप रोजाना कर रही हैं डे टू डे लाइफ में, बात करेंगे इसके बारे में। मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP लाइफ पॉडकास्ट पर, और मेरे साथ डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी, गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम मैक्स हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली। वेलकम टू ABP लाइफ पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच। लैंसेट स्टडी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें कि दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर की सिचुएशन को अच्छे से बताया गया है। भारत में महिलाओं में होने वाली 23% डेथ का जो रीजन है वो सर्वाइकल कैंसर है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो एशिया में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो भारत में है। More than 58% of all cases of cervical cancer globally were estimated in Asia, with India accounting for the highest number of cases. 21% भारत में, इसके बाद चीन में 18%। और लैंसेट स्टडी कहती है कि सर्वाइकल कैंसर से होने वाली 40% डेथ में 23% भारत में होती हैं, और ये सबसे ज्यादा है। बट इंडिया में क्यों इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं? सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। Okay, so basically the incidence of cervical cancer in India is one of the highest in the world. That is definitely true. And it is estimated har saal there would be around about 800,000 new cancer cases in India every year. So in that, since cervical cancer जो होता है वो typically HPV जो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, तो उसकी प्रेवलेंस अगर देखी जाए इंडिया के अंदर तो वो भी काफी हाई है, टू द ट्यून ऑफ अबाउट 35 to 40%। ये HPV क्या है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें? तो HPV होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दिस इज वन वायरस जो कि ओवर 95% सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। So HPV जो होता है, it can infect the cells on the surface of the skin, those lining the genital, the anus, the mouth and throat. And it can spread from one person to another during a skin to skin contact. ठीक है। And one way it spreads typically is through sexual activity. Okay. So different parts of HPV, there are so many types of HPV viruses, 150 subtypes. They can cause warts also, and they can cause cancer also. So there are certain high risk types which are cancer causing ones, which are typically in women related to cervical cancer, vulvar cancer, vaginal cancer. And similarly in men they can cause penile cancers. So coming back to the basic thing that we were talking about, कि जो ये cervical cancer का incidence है, it is to the tune of about 18.7% in India per 100,000 women. So which is pretty high, definitely pretty high, and it is one of the causes of mortality जो कि प्रिवेंटेबल है टू अ लार्ज एक्सटेंट। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से ओवर 95% केसेस में होता है, एंड ये प्रिवेंटेबल है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट इट। यस, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी हम आएंगे, पर ये जानना चाहूंगी, क्या सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक है? नो, इट इज नॉट जेनेटिक पर से। Okay. It is mostly related to HPV infection, which is an acquired infection that happens related to somebody's sexual history, or there are other risk factors as well, but not genetic. जी। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, क्या कोई एज है जिसमें ये सबसे ज्यादा होता है? और इसके अगर सिम्टम्स की हम बात करें, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स इसके टिपिकली होते हैं कि abnormal bleeding होती है in between the menstrual cycle of a woman. If there is an abnormal bleeding that is happening, or specifically it is called post-coital bleeding, that after a sexual activity if a woman bleeds, it is one of the most common symptom that a woman presents when she has cervical cancer. And sometimes there can be a foul smelling discharge that she comes with, and जब थोड़ा और एडवांस हो जाता है, लोअर बैक पेन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आर देयर।
ओके, और कोई एज है स्पेसिफिक जिसमें ये सबसे ज्यादा होता है? Age specifically, basically it is a bimodal distribution. So between 40 to 50 and then between 60 to 65. It's a bimodal distribution that is there. ओके, मतलब यूथ में नहीं होता अगर हम नहीं, I would not say that. I have seen so many young cervical cancer patients in their 20s. Oh, okay. So basically what one needs to understand over here is कि whenever a woman has the onset of sexual activity, suppose a woman is having an early onset of sexual activity and she gets that HPV infection. So in over 90% of the cases, the HPV infection just goes away. Okay. But from the start of the HPV infection to the development of cervical cancer, it takes about 10 to 15 years for it to develop. That is why it is so important to keep getting your regular checkups done. Because in those 10-15 years, you can pick it up. Okay. It doesn't develop overnight. It is a long oncogenic process. कि एक process के बाद वो different levels पे जाता है, जो कि pre-cancerous होते हैं, जो कि पकड़ में आ सकते हैं, treat हो सकते हैं, फिर जाके ये cancer बनता है. बिल्कुल. और अब मैं आना चाहूंगी इसके diagnosis और treatment के phase पर क्या होते हैं ये? So diagnosis typically इसका होता है on clinical examination. After a patient presents with symptoms, the doctor, the physician just examines the patient, takes a biopsy from the cervix, easily biopsiable, and on the basis of the biopsy report, a diagnosis of cancer is made. And then we get certain imaging done, whether MRI or sometimes even PET scan अगर advanced cases suspected होते हैं. So depending upon all these imaging reports, a particular stage is to the cancer. It would be anything from 1 to 4. 4 being the highest. जी. और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो अगर ये अर्ली स्टेजेस में होता है तो इसकी सर्जरी करी जा सकती है. पर अगर ये एडवांस स्टेजेस में आ जाता है तो हम लोग कीमो रेडिएशन प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट रिमेन्स रेडिएशन और उसमें थोड़ी सी कीमो ऐड करी जाती है. एंड राइट नाउ इनफैक्ट वी हैव वन ऑफ द लेटेस्ट वैक्सीन जो कि लास्ट ईयर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, which is called Gardasil 9, जिसके अंदर 9 strains of HPV are covered. It's a monovalent vaccine. Before that we used to have Gardasil 4, which is 4 strains being covered. So yes, even the latest vaccines are now available in India, and it is absolutely recommended for young girls to even starting from the age of 11 years to get vaccinated. Okay, मतलब ये हमें चाहे हो या ना हो, बट हमें ये वैक्सीन ना होने पे ही करना है. होने के बाद नहीं करना. It's a preventive thing. It's not an इलाज. It's not a method of treatment. It is a preventive measure. जैसे वैक्सीन होती है हमारी टिपिकली कि कोई बीमारी ना हो, उसके लिए होती है. बिल्कुल बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी नो इट्स वायरस एसोसिएटेड. सो जस्ट लाइक हम कोविड की वैक्सीन देते हैं कि कोविड ना हो, सिमिलरली वी गिव अ वैक्सीन ऑफ दिस HPV वायरस ताकि सर्वाइकल कैंसर ना हो. अच्छा, हम सब कहाँ गलती कर रहे हैं डॉक्टर अपना ख्याल रखने में? महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना है? आप क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ डॉक्टर? So we should not wait for symptoms to happen. We should regularly get ourselves checked by gynecologist or get a pap smear done by a trained professional. Along with HPV testing if you're over 30 years of age. Less than 30, only pap smear. So after a woman is sexually active, she needs to get a pap smear. Okay. And after the age of 30, along with an HPV testing. So this is no-brainer, one of the best investments you can do for your health if you're a woman. जिससे हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो कि हम कर रहे हैं. हाँ, हर 3 साल पे करवाना है. It is such a comfortable thing in any case. We can prevent such a big thing from happening. Yes. अब आप रोजाना ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस से अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहे? So like we were talking about young girls going through cancer, specifically cervical cancer, and it really disheartens me that a lot of young women, even in their late 20s, early 30s, they get such advanced cervical cancer. So I really feel bad, not just for them, but anybody who comes with an advanced stage of cancer, specifically cervical, that ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम डेवलप होने से एकदम रोक सकते हैं.
we just need to be aware of things. Okay. राइट टाइम पे अपने स्मेयर्स करवाते रहिए, राइट टाइम पे अपने चेकअप्स करवाते रहिए, उसको बनने ही मत दीजिए. That is one of the best things we can do to prevent cervical cancer along with vaccines. Yes. आपसे जो आखिरी सवाल लेना चाहूंगी वो यही कि आपने शुरुआत में कहा था रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि ये सेक्सुअली एक्टिव होने के अलावा भी जो इसको लेकर के रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर आप बताएं. Apart from, having an exposure to HPV per se, which is through sexual history, multiple sexual partners, or having even one partner who is HPV infected for that matter, it can lead to HPV infection. Apart from that, it is believed that smoking भी increase करता है risk. अच्छा, okay. Right. So the women who smoke, उनकी they are twice as likely to have cervical cancer compared to women who do not smoke. Okay. So tobacco के जो by-products होते हैं, they have been found in the cervical mucus of women who smoke. Okay. So they damage the DNA of the cells, which makes them less effective in fighting HPV infections. Okay. So this is regarding smoking. Then having a weakened immune system because of any other reason. So immunosuppressants, autoimmune disease के लिए किसी को HIV AIDS है और any other post organ transplant immunosuppression ले रहे हैं, steroids ले रहे हैं, one has a weakened immune system. So again the body's ability to fight HPV infection becomes low. Okay. Then some other chlamydia kind of infections. Chlamydia is another very common kind of infection that happens. So अगर वो हो तो co-infection with HPV becomes very high chances. And chlamydia वाले जो bacteria होते हैं, they even help the HPV virus to grow and live on the cervix, which may increase your chances of having cervical cancer. Then it is even said, although it's quite controversial, that long-term use of oral contraceptive pills, जो birth control pills होती है, हाँ जी, they can also lead to an increased risk of cervical cancer. Okay. But once they are stopped, the risk goes back to normal. Okay. So it's a very debatable thing. One has to see the benefits versus risks of that, and it's a very debatable thing. Yeah. And having multiple pregnancies, younger age at early pregnancy, and lower socioeconomic status, and a diet which is not so healthy are other associations. बिल्कुल. So कुल मिला के जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है वुमेन की हेल्थ के साथ, वो बिल्कुल भी नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना है, ताकि हम इस सर्वाइकल कैंसर से बचे रह सके. थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर. थैंक यू मानसी. This is an ABP Live podcast.